Hey, hi, this is Gautam. Welcome back. This video is for very young investors or aspiring equity analysts. Okay. People here who are just starting out in investing in equity research field, they may find value. Okay. So, see, the topic I wanted to cover in this video is कि what is compounding return, what is re-rating return, and why do certain investors they invest in micro cap, and how do they compute return? अगर किसी भी कंपनी में या छोटी कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो how you can compute return. Okay, so those are the few topics I wanted to cover in this very short video. Okay, and so why do investors see when investors they invest in a very small company or a micro cap or a small cap company? Okay, so they think they would be able to make a handsome return. That's why they invest in a risky company. They'll be able to make a handsome return very quickly. Because small companies, na, they have a small revenue base, they have a small profit pool. So their thought process, the investor in putting their money in that small company, their thought process is that this small company would be able to, let's say, double their revenue or triple their revenue या 4x कर लेगा 5x कर लेगा revenue in very short span of time. Okay, all right. लेकिन if you let's say if they invest in ITC or any like very big company, okay, then ITC or Reliance they would not be able to double their revenue. You know, it will take they now because ITC and Reliance, I'm just taking examples, they are so big, so it will take them a while to let's say double their revenue. So the returns that you would expect from ITC or any big company, okay, आप कम रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे. लेकिन स्मॉल कंपनी का अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आप ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे और जल्दी एक्सपेक्ट करोगे. ओके, सो सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन कि एक एग्जांपल लेते हैं ऑफ हरिओम पाइप. Okay, कि it's a micro cap company. It makes steel tubes and pipes. Okay, so why certain big investors they have put in money in that stock? कि what would they have thought by putting their money और उन्होंने अपने दिमाग पे रिटर्न कैसे कंप्यूट किया होगा. Okay, so वो हम समझते हैं in this short video. Okay, and this short video would be a snippet from a detailed video that I've already made on Hariom pipe. So the detailed video that I'll probably link it here. So that detailed video is all about how you can do in detail आप डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस एंड वैल्यूएशन कैसे कर सकते हो. ओके, so I'll link that video here. So this video is really a snippet of that video. All right, so hope you enjoy learning the next 5-6 minutes. All right, and reach out to me if you have any questions. Okay, and yeah, before I get started, just one thing more. Let me just share my screen really quick and then I'll play the video snippet. ये थोड़ी dated numbers हैं, but in the screen in the page that you see, I have Hariom Pipe. I have Hariom Pipe के peers, APL Apollo, which is a very big company now, JTL and Hitech. Okay, so if you just look at this last value, the metric here, EV by EBITDA, valuation multiple. So you see Hariom Pipe. Okay, when I took these numbers, I think it was 3 months ago. Okay, so EV EBITDA of Hariom Pipe was around 8. Okay, एपीएल अपोलो दी ईवी एबिटास मल्टीपल सेम इंडस्ट्री में कंपनीज हैं ये सारी. ईवी जो पीयर है एपीएल अपोलो उसका मल्टीपल बहुत ज्यादा है. जेटीएल का 15 है एंड हाईटेक इज 30. Okay, so you see there's a lot of variance in the multiples of all these companies. APL Apollo being trading at the highest multiple, Hariom at the lowest, and JTL and Hitech are pretty similar multiples of 50. All right. So with that understanding, okay, let's get into this short video. Okay, so Hariom pipe मैंने pull किया है. So if I just do a select EV by EBITDA, okay, so you see they were trading at 20 multiple. Now they are at 8. So the multiple has been on the decline, 8.6 to be precise. That's what the multiple it's trading at right now. Okay, and if you see, if I look at the shareholder, okay, if I look at Malabar India Fund, Malabar is run by Sumit Nagar, someone I really respect. Okay, so I think Sumit Nagar is a great investor. So he has put in a lot of capital. In fact, he has taken more than 9% stake in the company. Okay, last year. Okay, so have some public investors like Sundar Iyer and and Banjana Sundar Iyer. Okay, so they have taken like sizable stake in this business. Okay, see, अगर आप केवल मल्टीपल देखो, अभी हम देखेंगे कि मल्टीपल फेयर है कि नहीं, वो अलग बात है, लेकिन पीयर से अगर कंपेयर करो, ये मल्टीपल कहाँ गया, मल्टीपल पेयर से अगर ये मल्टीपल कंपेयर करो तो ये काफी लो है. तो आप क्या सोचते हो कि री रेटिंग हो जाएगा. री रेटिंग का मतलब क्या हुआ? सी देयर आर टू वेज यू कैन यू कंप्यूट रिटर्न. वन इज कि कंपाउंडिंग रिटर्न होगा. द अदर इज री रेटिंग. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ कंपाउंडिंग एंड री रेटिंग, एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंपाउंडिंग एंड री रेटिंग विल गिव यू अ टोटल रिटर्न. तो ये थोड़ा समझते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो अभी का मल्टीपल इज 8.5. ओके, सो 8 ले लेते हैं.
जस्ट समझाने के लिए. So any which ways you can see this is the latest EBITDA, which is 135. Okay, so 135 is the latest EBITDA. Okay, so let's use this to let me go to my Excel sheet. See, there are I've opened this blank page. Okay, see, there are two types of how you calculate return is. First is there is compounding return. वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? लेट्स से अभी इनका मल्टीपल कितना है? ईवी बाय बेटा इज 8 टाइम्स. लेट्स से 5 साल बाद 1 2 3 4 5 साल में इनका ईवी बाय बेटा अज्यूम कर लेते हैं कि इनका ईवी बेटा इट्स द सेम 8. दे ट्रेड 8 टाइम्स बेटा. ओके, सो इफ दैट हैपेंस, और अभी बाय द वे व्हाट इज देयर, लेट मी जस्ट डू दिस, आई थिंक इट्स बेटर. So this is EV by EBITDA, and what is the EBIT? EBITDA, sorry, EBITDA is 135, right? Okay, so अज्यूम कर लेते हैं कि जो ग्रोथ रेट होगा दैट विल बी, अज्यूम कर लेते हैं कि दे विल ग्रो बाय 15% एवरी ईयर. 15% का ग्रोथ दिखाएंगे एवरी ईयर, अज्यूम कर लेते हैं. okay? तो एबिटा 30% वॉल्यूम ग्रोथ बोला है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, लेकिन अज्यूम करते हैं 15% वॉल्यूम ग्रोथ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 15% वॉल्यूम ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. तो कैसे करोगे आप? okay? okay? तो इसे मैं कंपाउंड कर रहा हूँ, जस्ट कंपाउंडिंग 135 विद 15%. okay? so so the EBITDA from 135 becomes 352. okay? तो मेरा ईवी कितना हो जाएगा? ईवी कितना हो जाएगा एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स? एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स माई ईवी वुड बी 350 टाइम्स 8. okay? so that means अभी इंटरप्राइज वैल्यू कितनी है इनकी? इंटरप्राइज वैल्यू इज 175 टाइम्स 8. सो 1400 CR से EV will double to 2800 CR, which again is of course a compounding growth of 15%. So this is compounding return. Simple. Okay, that is one. Now the reason I think why investors are pounding money in this company is not only compounding return but re-rating. That is another form of return, re-rating. A combination of both compounding and re-rating से आपको total return you can get. Okay, okay? So here, so same चीजें, okay? With the exception कि your EV/EBITDA multiple, okay? Instead of, it would, let's say, re-rate to a multiple of 15, which is the multiple at which other peers, I'm not talking about APL Apollo, I'm talking about JTL and high tech, they are trading at 15 times EBITDA. तो अगर अज्यूम कर लेते हैं उनका मल्टीपल ये रीच कर लेता है 5 साल में, 3 साल में, जो भी. तो क्या होगा, क्या होगा? तो ईवी कितना हो जाएगा इनका? ये तो ईवी एबिटा हो गया, ये ईवी एबिटा हो गया. सो ईवी एबिटा इंक्रीजेस फ्रॉम 8 टू 15, 8 से 15 हो गया. ईवी कितना हो गया? ईवी कितना हो गया? 115 times 350. So you see EV from 1400 becomes 5300. अगर सिर्फ कंपाउंडिंग रिटर्न की बात करें तो ईवी केवल डबल हो रहा था 15% से, लेकिन इफ वी ऐड री रेटिंग एंड कंपाउंडिंग बोथ, तो ईवी क्या हो रहा है? तो हम रिटर्न कंप्यूट करते हैं तो रिटर्न आई थिंक 30% होगा, या 30%. सो इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग कि री रेट होगा तो नॉट ओनली देल गेट कंपाउंडिंग बट देल गेट री रेटिंग रिटर्न एज वेल. ओके, री रेटिंग मतलब एग्जैक्ट मल्टीपल होगा 15. ओके, दिस इज करंट मल्टीपल, और ये एट द एंड ऑफ ईयर 5 या ईयर 3 जो भी ले लो, तो री रेटिंग हुआ, सो यू गेट बेनिफिट ऑफ री रेटिंग. सो दैट्स व्हाट इन्वेस्टर्स आर बेकिंग इन. ओके, कि इतना रिटर्न का पोटेंशियल है इफ दे दीज गाइज डू सर्टेन थिंग राइट. ओके, प्लस देयर इज अनदर फॉर्म. ये तो दो रिटर्न हो गए. दिस इज कंपाउंडिंग रिटर्न प्लस री रेटिंग प्लस कंपाउंडिंग. द थर्ड इज डिविडेंड. So if they give dividend, let's say if they give 1% dividend, any company, so the 30 will become 31. Okay? So that's how you compute return. You have to look at compounding, re-rating plus compounding, and any dividend yield जो कंपनी typically देती है या बोल रही है कि कोई dividend payout देगी, तो you can add the dividend yield as well. So that's how you compute the return. Okay? Yeah. All right. So hope you found this very short video helpful.
So if you are a young investor or you are an aspiring equity research analyst, and if you want to learn key how you can go about thoroughly researching and analyzing a business and valuing a business, then feel free to reach out to me. All right. Thank you.